like the same m1 x2 minus x1 mi xi plus 1 minus xi. We are talking about lpf. Can you see that lpf there is no c in between, so it will be xi and xi plus 1 interval. And yes, so this is the definition of lpf. What will be lp star f? In LP star f, we are dividing my interval xi to xi plus 1 into two parts. The first is xi to c and second is c to xi plus 1. Is it clear? Now see, in the interval xi to c, there is some other minimum. So I will define that minimum as mi1, that is GLB of function in the interval xi to c. And next thing mi2 I will define GLB of function in the interval c to xi plus 1. Is it clear? So in LPF these two are same, that is your mi in LPF, because in LPF the interval is xi to xi plus 1. In LP star f the interval is xi to c and c to xi plus 1. Is it clear everyone? I'm just writing the definition of both. Yes. Okay. Now the thing is that what we want to prove. Can you recall this thing? So suppose this is my actual area, that is integration a to b f of x dx. This is my original partition LPF, original partition upper sum, that is UFP. UPF below or UFP both are same. Okay, so that is my LFP and that is my UFP. So if I refine my partition, means if I introduce some more nodes in it, then what will happen? We will go much closer to my actual area. Means your next LFP will be somewhere here. Originally it was here, it is going towards here, correct? Means I'm going much closer to my actual area. Since it is LFP is approximated area, if I introduce some more nodes in it, I will go much closer to my actual area. If I add one more node, I will be much closer to my actual area. Is it clear? I will be here only somewhere. Same in the case of UFP. What will you see? If I introduce some more nodes, what will happen? It will come here. UFP1 will come here. If I add something, it will come here. Means we want to prove LFP is less than equal to LFP1 and UFP1 one, or you can say star, in our case it is star, it is less than equal to UFP. Is it clear? So this is what we are supposed to prove. Can you see that LFP is less than equal to LFP1 and UFP1 is less than equal to UFP. This P1 is your refinement. I may have written it somewhere. Okay. Is it clear? Is the question clear what we are supposed to prove now? Now we are going to do, we are going to prove this. LFP it is less than equal to LFP1. Is it clear? So I have written definition of both LFP also and L, that is P star F. LFP star बोलो तभी भी चलेगा. अभी मुझे क्या चाहिए, प्रूफ क्या करना है? LFP is less than equal to LFP star F. Correct? So can you see that all the terms are same up to MI? Yes. Here also all the terms are same up to here. Can you see that? So actually to prove this, what we are supposed to prove, LFP it is less than LFP1. It is enough to prove LFP star है अपने पास ना, P star minus LFP it is greater than 0. Is it clear? और अगर P पहले लेना है तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझा? It is greater than equal to 0, so this will go that side and you will get the inequality. Okay, so we are going to consider that one. Okay, before going to that, फिर मैंने अपने FYBSC के यूनिट 1 पे आ गए थे. क्या बोला मैंने? If A and B are bounded non-empty set and if A is subset of B, I am just talking about proper subset. It may be no,
अगर इम्प्रॉपर हुआ तभी भी चलेगा. आई एम जस्ट हियर, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रॉपर सबसेट. दिस इज ट्रू फॉर इम्प्रॉपर ऑल्सो. ओके, what am I saying? GLB of A, it will be greater than equal to GLB of B, and LUB of A, it will be less than LUB of, that is, we are supposed to prove this two inequality. Yes. So I have already done GLB of A that is greater than equal to GLB of B. I asked you guys to prove this LUB of A is less than equal to LUB of B. Can somebody tell me the proof of LUB of A, it is less than equal to LUB of B? A is subset of B given. Yes. So this is the proof of GLB. Let me do the proof of LUB. Or should I revise the GLB? Then it will be directly clear with you. Okay. Okay. The first thing we started with, what is the definition of GLB? So GLB का पहले definition लिखा. Suppose GLB of A equal to alpha बोला मैंने. Correct. GLB means greatest lower bound. The first condition must be alpha is an lower bound. Second condition, if beta is lower bound, then beta must be less than equal to alpha. Why? Because our alpha is the greatest lower bound. Is the definition clear? So this is my definition. Alpha is a lower bound. Second, if beta is a lower bound, then beta must be less than equal to alpha. Is the definition clear? This was the definition we learned. Next thing, इसी का मैं contrapositive लिख सकता हूँ. What will be contrapositive of this? If beta is greater than alpha, then beta is not a lower bound. Is it clear? Contrapositive यही होगा ना? This is your statement P. This is your statement Q. P imply Q. P imply Q. It is equivalent to negation Q imply negation P. That is called contrapositive law. Okay. So is it clear? So let us start our proof now. Correct. We just draw a graph. एक real line draw किया मैंने. उसमें ये set को मैंने बोला A. This is my A, and this outsider is B. Correct. From the graph, it is clear that A is subset of B. Yes. Now we know that alpha is GLB of this set and beta is GLB. I'm talking about greatest lower bound in this case. Okay. ये मैंने अपर बाउंड की बात की थी, LUB वो कट करते हैं. So alpha is lower bound. In suppose I want to make this statement. Hello. Hello. Can you hear me? Hello. Okay. So from the diagram that, see, alpha is LUB of A. This is my set A. So LU will be, minimum will be somewhere here. Correct. And beta is GLB की बात करना, GLB. So beta will be somewhere here. So from the diagram, is it clear that beta is lower bound of A? From the diagram, I am not proving it. I will claim it later on. So from the diagram, I am seeing that beta is lower bound of this. This was my set A. I see that beta is here. So beta is lower bound of A. So suppose somehow I prove, because this diagram need not be true for everyone. This is just, I'm talking about real case. If it will be in terms of function, it may be something else. But the thing is that I am going to claim beta is lower bound of A. Suppose I claimed it. Suppose I prove that beta is lower bound of A. Now you know something about what is alpha. Alpha is GLB of A. Do you remember the definition of GLB? The second part. If beta is lower bound, then beta must be less than equal to alpha. See, what I'm saying, beta is lower bound of A and alpha is my GLB. So beta must be less than equal to alpha. This is your first theorem. We proved it. This is GLB of B. It is less than equal to GLB of A. Is the proof clear, everyone? अभी तक proof हुआ नहीं है.
Just the thing is that you need to prove beta is lower bound of A. Correct? If you prove beta is lower bound of A, of set A, then what? Since alpha is GLB of A, then by the definition we already know GLB means क्या होता है? Greatest lower bound. That means beta must be less than equal to alpha. Okay, so the thing is that we need to prove beta is a lower bound of A. But what is beta? Beta is lower bound of set B. Yes, are you with me? Yeah. So beta is lower bound of B. What do you mean by lower bound? For all B belong to B implies beta must be less than equal to B. This is the definition of lower bound. Yes. Now we know something about A is contained in B. Means all element of A, they are in B. But we know something about all element of B. So can I write the same equation as for all B belong to A implies beta is less than equal to B? Did you get it? Since A is subset of B, that means what? For all element of A are in B, and we know something about all element of B. They are less than beta. Yeah. Beta is less than that, all element of B. So I will write it as for all B belong to A implies beta is less than equal to B. So from this statement can I conclude beta is lower bound of A? Look, for all A, beta is less than equal to B. Is it clear? Just we are playing with statement, कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं हम लोग. Then what? Are we done now? Beta is lower bound of A, but alpha क्या है? GLB of A. So beta must be less than equal to alpha. Is the proof clear? Proof दो लाइन का ही है, but theory बहुत है इसके अंदर. Okay. So we proved something. क्या proof किया हम लोग ने? If A is contained in B, याद रखना A is contained in B, then GLB of A it is greater than equal to GLB of B. We are going to use it in our proof जो ऊपर हम लोग बात कर रहे थे. ठीक है. अभी can somebody tell me the proof of LUB of A and LUB of B? Definition लिखते हैं. Very good. LUB of A को सपोज मैं अल्फा बोलता हूँ. ये अल्फा और ये अल्फा में कंफ्यूज मत होना, उसको मैं उधर ही क्लोज करता हूँ. ठीक है. Let us write the definition. Tell me what is the definition? Yes, tell me. First condition, alpha is upper bound. Next, if beta is upper bound, any other upper bound, upper भी other भी बोलने की जरूरत नहीं है. Then yes, alpha is less than equal to beta. Is it also okay? Very good. Because alpha is the least upper bound. Everyone, is it clear? Is the definition clear? अगर definition हुआ तो we are done. Actually कुछ करना ही नहीं है. अभी proof क्या करना है अपने को? Yes, डाउट है कुछ? हाँ, इसका कॉन्ट्रापोजिटिव करेक्ट. इसका कॉन्ट्रा क्या आएगा? If alpha is greater than B, then beta is not upper bound. करेक्ट है. सी ये अपर बाउंड लोअर बाउंड ये एल यू बी जी एल बी ये सब जो भी है इस पे बहुत बार हम लोग आने वाले हैं. ये टॉपिक के बाद आगे भी इसका यूज है. ओके, इज द डेफिनेशन क्लियर एवरीवन? नाउ लेट अस स्टार्ट. अपने को जो प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है? वी आर गिवन ए सबसेट ऑफ बी. वी नीड टू प्रूव LUB. Suppose we are considering LUB of A equal to alpha and LUB of B equal to beta. So to prove
What do we have to prove? Alpha is less than equal to beta. Is it clear? So let us start the proof. So same in this case also, let us draw the graph first, and from graph it will be clear something. So this is your set B and this is your set A. Okay. So what is LUB of A? That is alpha. So alpha may be somewhere here in this set only. Maybe something here. Okay. And what is LUB of B? That is beta. So this is set B. So LUB of B will be somewhere here. So can you observe something? Beta and this set. From diagram it is clear that beta is upper bound of set A. Is it clear everyone? Because what is beta? Beta is okay. Now what? Next statement who will say? But we know something about A. A का LUB कौन है? Alpha. So what is the definition of LUB? The second condition. If beta is upper bound, then here beta is an upper bound, then alpha must be less than equal to beta. Because what is my alpha? That is least upper bound. Is it clear? So proof done. The thing is that अपने को proof क्या करना है? Beta is an upper bound. So can somebody tell me how to prove beta is an upper bound of the set A? Same. Let us start. What is beta? Beta is upper bound. करेक्ट एलयूबी बट लीस्ट की ज़रूरत नहीं है अपने को, इसलिए मैं जस्ट अपर बाउंड लिखता हूँ ऑफ बी. देन व्हाट? दैट मीन्स फॉर ऑल बी बिलोंग टू बी. करेक्ट. यस बोलो. बी इट इज लेस देन इक्वल टू बीटा. Yes. Next thing is that A is contained in B. That means what? All element of A in B. So I can write the above statement as for all B belong to A implies B is less than equal to beta. Is it clear everyone? So from this it is clear that beta is upper bound of that set. Is it clear everyone? Beta is upper bound of set A. Okay, if beta is upper bound then what? अल्फा क्या है? लीस्ट अपर बाउंड है. दैट मीन्स अल्फा मस्ट बी लेस देन इक्वल टू बीटा. इज द प्रूफ क्लियर? सी, ये सब प्रूफ करना इजी है. जस्ट द थिंग इज दैट यू शुड बी थरो विथ योर डेफिनेशंस. अगर डेफिनेशंस अच्छे से समझा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पड़ाक से आएगा. ओके. सो लेट अस कम बैक टू. सो वी वांटेड टू रिलेशन बिटवीन दिस mi1 and mi and mi2 and mi. So let us see one thing. Uh, Let me write everything. What was that? What is my mi? Can somebody tell me what is mi1 and what is mi2? What is mi? It is GLB of which function and which interval? GLB of function in which interval? No, this is mi. M कहाँ से आ गया? xi to xi plus 1. Very good. कोई तो बोला. See, can you see that? mi1 क्या है? xi to c and mi2 क्या है? c to i plus 1. What is mi? अगर मैं स्टार्टिंग के डेफिनेशन में जाऊँ, देखो मैंने क्या डिफाइन किया था. कैन यू सी दैट? किधर है? डू यू सी दैट? कैपिटल एम आई बोला था एल बी ऑफ फंक्शन, स्मॉल एम आई बोला था जी एल बी ऑफ फंक्शन इन विच इंटरवल? एक्स आई टू एक्स आई प्लस 1. That's why we used to write it now mi into xi plus 1 minus xi. Can you see that? That's why we are writing mi into
xi plus 1 minus xi. What is xi plus 1 minus xi? It is the width of that strip जो भी है अपना इसका width. This is xi plus 1 width will be this and height will be your mi. Is it clear? So what is my mi? Xi to xi plus 1. Next here, hello, hello. Okay. What is mi1 and mi2? In which interval? What is mi1? xi to c. c बड़ा है कि xi बड़ा है भाई? इंटरवल क्या था? xi, here it is xi plus 1. Here in between there is c. Is it clear? So here this is interval c to xi plus 1. Okay. Now see here we are talking about GLB only. Okay. Now observe something. Xi to c, it is contained in xi to xi plus 1. Is it clear? So सेम अगर GLB ऑफ मैंने फंक्शन की बात किया तो यही इंटरवल आएगा मतलब ये सेट दिस सेट एंड दिस सेट इज कंटेन्ड इन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट GLB तो GLB क्या रहेगा ए इज सबसेट ऑफ बी तो GLB क्या होता है मतलब MI और MI1 में क्या रिलेशन रहेगा सी ए इज सबसेट ऑफ बी अगर ए का मैंने GLB अल्फा बोला बी का बीटा बोला देन व्हाट अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा ना यही था ना डू यू रिमेंबर दैट सी ऊपर ही प्रूफ किया भाई इधर गया या डू यू सी दैट GLB ऑफ बी इट इज लेस देन GLB ऑफ ए मतलब GLB ऑफ ए इज ग्रेटर so here also what is GLB of A this is your GLB of this set A what is GLB of A mi1 that will be greater than is it clear can you do the same thing for this set yes it will be xi to xi plus 1 same क्या आएगा mi it is less than equal to mi2 is it okay yes is it clear okay now let us we have the relation now करेक्ट करना क्या था अपने को डू यू रिमेम्बर लेट मी स्टार्ट विथ कहीं से भी स्टार्ट करो एल पी एफ माइनस एल पी स्टार एफ स्टार्ट किया तभी भी चलेगा और यू कैन स्टार्ट विथ ये पहले फिर ये ठीक है लेट अस सी पहले पूरा लिखता हूँ मैं एल पी एफ क्या रहेगा एम नॉट एक्स वन माइनस एस ज़ीरो प्लस एम वन एक्स टू माइनस एक्स वन अप टू here in between it will be mi is it clear and this will be interval xi plus 1 minus xi and this will be up to and the last term will be last term क्या रहेगा m n minus 1 correct b minus that is xn minus xn minus 1 इज इट क्लियर एवरीवन इज द डेफिनेशन क्लियर सी जो सेकंड टर्म वाला सब सफिक्स है वही लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे m0 x0 m1 x1 so here it will be mn minus 1 here this is xn minus 1 is it clear माइनस सबट्रैक्ट किससे करना है LP स्टार एफ बोलो मुझे क्या आएगा हेलो इधर क्या आएगा
mi1 आएगा एंड विच इंटरवल, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दैट इंटरवल, c माइनस एक्स आई। नहीं, c ये रिमेंबर रख, बड़ा कौन है, c बड़ा है कि एक्स आई बड़ा है, लेंथ की बात करूं मतलब c माइनस एक्स आई, समझ रहे हैं। नेक्स्ट mi2, बोलो ये, दिस विल बी एक्स आई प्लस वन माइनस सी, परफेक्ट, वेरी गुड। प्लस बाकी के टर्म मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड हियर इट विल बी एम आई एन माइनस वन एक्स एन माइनस, इज इट क्लियर एवरीवन। कैन यू सी दैट क्या क्या कैंसिल होएगा और क्या बचेगा, बचेगा सिर्फ अपने को ये एम आई एक्स आई प्लस वन माइनस एक्स आई, यस, एंड यहाँ पे माइनस एम आई वन c minus xi, and here it will be minus mi2 xi plus 1 minus c. Is it clear everyone? Okay, now what is the relation we are having, do you see this, these two relations are there, क्या करूँ मैं, c minus xi minus c, so what we can do in this interval, I can add and subtract c, that is we are going to do this, see xi plus 1 माइनस सी, फिर प्लस सी माइनस एक्स आई, डिड यू सी मैंने माइनस सी और प्लस सी किया, एंड दिस विल बी एज इट इज़ माइनस एम आई वन, आगे का जस्ट मैनिपुलेशन है थोड़ा इधर उधर करने का बस, माइनस एम आई टू इंटू एक्स आई प्लस वन माइनस सी, इज़ इट क्लियर। नेक्स्ट स्टेप क्या करूँ मैं, ये एम आई फर्स्ट ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया, सो आई विल बी गेटिंग एम आई इंटू एक्स आई प्लस वन माइनस सी, कैन यू सी दैट इधर भी वही है, सो दोनों को साथ में लिखो चलेगा क्या, एम आई माइनस एम आई टू मल्टीप्लाइड विथ एक्स आई प्लस वन माइनस सी प्लस सेकेंड टर्म, कैन यू सी दैट एम आई मल्टीप्लाइड विथ सी माइनस एक्स आई, ये भी सी माइनस एक्स आई है, सो दिस विल बी एम आई मल्टीप्लाइड माइनस एम आई वन मल्टीप्लाइड विथ सॉरी सी माइनस एक्स आई, इज इट क्लियर, हेलो इज इट क्लियर, ओके कैन यू सी नाउ वी आर डन, एम आई बड़ा है कि एम आई टू बड़ा है, ऑब्वियसली एम आई टू बड़ा है, ऊपर लिखा है हम लोग ने इनइक्वालिटी, यस, और यू कैन राइट इट हियर, एम आई इट इज़ लेस देन इक्वल टू एम आई वन एंड एम आई इट इज़ लेस देन इक्वल टू एम आई टू, सो जो ये पार्ट है दिस इज विड्थ, ये तो नेगेटिव नहीं रहेगा कभी भी, यस, so what is mi minus mi1, that is less than equal to 0, what is mi minus mi2, that is less than equal to 0, so this whole inequality it will be less than equal to 0, is it clear everyone। स्टार्ट क्या किया था मैंने, एल पी एफ माइनस एल पी स्टार एफ, कैन यू सी दैट ये टर्म नेगेटिव है फ्रॉम दिस, एंड दिस इज योर लेंथ, जस्ट एक कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन बोल सकते हो, दिस इज ऑल्सो नेगेटिव, दिस इज जस्ट विड्थ जो है जो पॉजिटिव टर्म, सो दिस इज सम ऑफ टू नेगेटिव नंबर, सो दिस विल बी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0, इज इट क्लियर। सो व्हाट आर वी गेटिंग, एल पी एफ इट इज लेस देन इक्वल टू एल पी स्टार एफ, कैन यू सी दैट यही कर रहे थे ना हम लोग, इनइक्वालिटी क्या थी, दिस इज माई एक्चुअल एरिया, here this is my LPF, LP star means I am coming much closer to my actual area, is it clear, LPF it is less than equal to LP star F, done, are we done now, this was the proof we are supposed to prove,
इज द प्रूफ क्लियर? सी इसमें बस पार्ट क्या था, ये पार्ट यूज़ करना, तो यूज़ करने के लिए मैंने वो प्रूफ किया। वो प्रूफ तुम लोग को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ ऑलरेडी डन बाय यू होपफुली इन FYBSC. So we are just going to say this, just write it A is subset of B. Then what about GLB of A and GLB of B? We know that GLB of B, it will be greater than equal to GLB of A. Yes. So here what we used, Mi is less than equal to Mi1 and Mi it is less than equal to Mi2. Other thing, ये तो सब algebra है, you can do it. Is it clear everyone? Yes. अथर्व, श्रेयस, समझा प्रूफ, समझा तुम लोग को? Can somebody tell me the same proof for capital Mi? वो केस में कैपिटल Mi1 बोलूँगा मैं एंड कैपिटल Mi2 बोलूँगा, करेक्ट? सो व्हाट इज माय कैपिटल Mi? कैन समबडी टेल मी व्हाट इज माय कैपिटल Mi? दिस इज LUB ऑफ फंक्शन इन विच इंटरवल? सेम ऐसे ही आएगा, बट इनइक्वालिटी चेंज होएगी ना. xi to c, it is contained in xi to xi plus 1. What can you say about Mi and Mi1? या मैं ऐसा ऐसा Mi1 and Mi, करेक्ट? क्या आएगा ये इनइक्वालिटी? लेस देन और ग्रेटर देन? Mi1 is greater than. See, again come back to your A is subset of B. So LUB of A, it is less than equal to LUB of B. Do you remember the proof? See, इसमें मिस्टेक बिल्कुल मत करना, इधर ऊपर हम लोगों ने प्रूफ किया है. कैन यू सी दैट? A is subset of B, LUB of A मतलब पहले वाले का LUB that is less than equal to B. सबसेट है बस, ये तो सिंपल है, याद रखना. समझा? सो इधर क्या आएगा? This is for Mi1. This is for Mi. So this will be less than equal to, na? Okay, sorry. Next क्या आएगा? C2 xi plus 1 that is contained in xi to xi plus 1. So ये क्या आएगा बोलो? Mi2 it is less than equal to Mi. Yes, is it clear? From here you can write it as Mi minus Mi1. ये तो रहने दो, उसमें देखेंगे हम लोग. क्या पहले कंसिडर करते हो वो डिपेंड करता है. आगे का प्रूफ समझेगा तुम लोग को, कर लोगे क्या? UPF माइनस UP स्टार F, करेक्ट? जस्ट राइट द डेफिनेशन. ओके, इज द प्रूफ क्लियर एवरीवन? सिंपल था प्रूफ. ओके, कैन समबडी टेल मी द प्रूफ नाउ? ट्रिक क्या है, करेंगे कैसे? जस्ट यू नीड टू से इट अगर वंस अगेन. जस्ट टेल मी द ट्रिक, अपना लॉजिक क्या रहेगा? जस्ट एक ही लॉजिक है और कुछ है ही नहीं इसमें. ओके, लेट मी आस्क विद समवन, जिससे पूछूंगा वो बताएगा, ठीक है? हाँ, मेघा, हेलो मेघा. ये इसमें तो दिख रहा है मेघा 75.
ये अपने क्लास में नहीं तो लेक्चर में क्यों बैठी है? ओके, मयूर। मयूर रोल नंबर 3 है शायद, क्या है ये? हाँ, रोल नंबर 3। मयूर है कि नहीं तू? हेलो। लगता है नेक्स्ट लेक्चर से मेरे को तुम लोग का भी वीडियो कैमरा ऑन करके ही पढ़ाना पड़ेगा। फ़ोन साइड में रख के बैठे रहते हो। ओके, ओमकार रोल नंबर 9। यस ओमकार, कैन यू हियर मी? अब गायब हो गए।